Hi everyone, welcome back to Coding Ninjas. So in today's stream, we'll be talking about how can we get a job, a software related job without a degree. So somewhere in the chat, if you could please confirm if I'm audible, and we'll start as soon as I know. Okay, so before moving forward with the stream, I'll just introduce myself. I am Rubin Kaur. I am working as a support engineer intern at Amazon, and apart from that, I'm working here at Code Ninjas as a content creator. Guys, we are working really hard to provide you with the best content on our channel, and I hope you're learning from it. So, if you do like the content, if you do like the stream, do like the stream and share with your friends just to show your support. It would really mean a lot to us. Uh, so hi everyone, hi. Okay, so let's start. In this session, we'll be covering how to get a software related job without a degree. And by personal experience, I have sat with people who are pursuing BBA, who are pursuing BCA in interviews for high tech related companies, FANG related companies, and they're never disbarred because of the fact that they are from a different background, that they're not having a CS or IT related degree. We often see this discrimination even in Tier 1, Tier 2, Tier 3 colleges because the only difference in this is that there is a more of a community when we talk about a Tier 1 college. वहाँ पे people are more tech oriented, they are more uh, into solving coding. हमारे टायर 3 या टायर 2 कॉलेजेस में इतनी यूनिटी इतना कोड कम्युनिटी सिस्टम नहीं होता है आज की टाइम पे वी स्टिल हैव यूट्यूब एंड ऑल बट पहले ये सब कुछ जब नहीं था तब इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो किसी को भी यूट्यूब करने से गूगल करने से इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी जितनी आज हमें मिल रही है सो इट्स नॉट अबाउट अ डिग्री आपको डिग्री की जरूरत है एक अच्छी जॉब के लिए इट्स अबाउट योर स्किल्स ये हम हमेशा बताते हैं कि आपके सर्टिफिकेट्स आपकी डिग्री एक पीस ऑफ पेपर जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि आप में क्या क्वालिटीज हैं अगर आपने एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिग्री ली है अगर आप काम कर रहे हो किसी अच्छी टेक कंपनी में एंड सो इट डज नॉट मैटर राइट कि ओके हाय एवरीवन हाय you cannot get a full-time job if you're 15 years old. You still have to be at least 18 to get a full-time job. You can apply for student-related jobs and yeah, or you can work as a freelancer. ओके सो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अगर विदाउट डिग्री अगर आप एक अच्छी जॉब एम कर रहे हो तो आपको करने चाहिए द फर्स्ट इज सेल्फ स्टडी यू शुड दैट इज वन ऑफ द की थिंग्स जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपको पता ही नहीं होगा कि क्या टेक है आपने क्या वर्क करना है तो इट वोंट बी कोई मैटर नहीं करेगी चीज राइट आप सीधा जाके आई नो किसी का मैं भी एक टेक ओरिएंटेड पर्सन हूँ if I see an application, if I see a new technology, I'm more prone to just create an application and learn about that. But that is not how things work. आपको उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री पता होनी चाहिए थ्योरी पता होनी चाहिए अब रिएक्ट में एसिंग सिंक का अगर आपको पास क्लैरिटी नहीं है कि फंक्शंस क्या करते हैं ये ऑफन एक छोटे बहुत कॉमन क्वेश्चंस है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है okay. Which skills are required to get IT related jobs without degree?
नॉर्मल स्किल जो हम एक आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री में पढ़ते हैं, जो हम एक एज ए बीटेक स्टूडेंट पढ़ते हैं। बीटेक स्टूडेंट्स हम क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सारे कोर सब्जेक्ट्स जो भी हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम एक अपनी आईटी उसमें पढ़ चुके होते हैं, राइट। तो जो स्किल्स हैं वो हैं आपके कोर सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। अगर आप आईटी पे फोकस कर रहे हो तो कोर सब्जेक्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? ऊप्स, ओएस, आपका अगर आप एक एसडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिस्टम डिजाइन भी आता है, नेटवर्किंग आती है, ट्रबल शूटिंग, नेटवर्किंग, ये मोर क्वालिटी, अगर प्रोन उसमें जा रहे हो तो ये सारी चीजें आएंगी। एंड या जैसे क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स होते हैं तो उसमें ट्रबल शूटिंग, टेस्टिंग, ये सब आता है, ठीक है। बाकी आई होप स्किल्स अब आपको पता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की तो यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट, बट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर आपके कोडिंग फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आपके कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। दैट इज व्हाट इज दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास एक आईटी की डिग्री नहीं है, या आपके पास बीटेक की डिग्री नहीं है, आप एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, ऐसा कोई नहीं पूछता है। आई एम माई सेल्फ सैटेड in interviews with people who are from EC background, triple E background के engineers थे, and I sat with interviews with them। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई कंपनी आपको जज करेगी कि आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आप उन्हीं जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे ऐसी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं दे रखी कि यू शुड हैव अ कंप्यूटर साइंस और आईटी डिग्री। अगर आप ऐसी किसी और जॉब में अप्लाई कर रहे हो, गुड टू। I am from a commerce grad. I am from commerce graduate and graduate in BCom, but now into switch into IT development. Do I need to get a degree? What are the challenges that I may face? Uh, the thing is कि आप अगर बीकॉम ग्रेजुएट हो तो आप स्मॉल बूट कैंप्स से स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम कमिंग टू, ठीक है। एज आई सेड, फर्स्ट स्टेप आपका है कि आपको सेल्फ स्टडी में सारे जो कोर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, या सेल्फ स्टडी में एटलीस्ट एक यूट्यूब पे इतनी रिसर्च कर लो कि आपके पास जो टेक है, आपको किस टेक में जाना है, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको इतना पता हो। बिकॉज क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट द ओनली फील्ड इन टेक्नोलॉजी। देर आर मेनी फील्ड, जैसे डेटा साइंस हो गई, जैसे एमएल रिलेटेड आप में ऑटोमेशन के इंजीनियर्स हो गए, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हो गए, आपके डेटा इंजीनियर्स हो गए। तो ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं टेक्नोलॉजी में, एंड काफी हर कंपनी में, हर फैंग कंपनी में इन सबकी हायरिंग होती है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि एमएल में आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। एमएल में भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, जस्ट आपके पास स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग पीपल लुक आउट फॉर, ठीक है। आप किसी भी डिग्री में हो, बस आपके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी में बस इतना अपना माइंड सेट कर लो कि आपको इस टेक में जाना है, उस टेक के बारे में फंडामेंटल्स, कोडिंग फंडामेंटल्स सीख लो। कोडिंग फंडामेंटल्स में क्या बात आती है, आज की डेट में हर रोज ऑलमोस्ट एक नई टेक की एडवांसमेंट होती है, एंड हर महीने में एक नया टेक स्टार्ट आ जाता है, ठीक है। तो सारे इंजीनियर्स को हर कोई हर महीने एक नया टेक स्टैक नहीं सीख सकता। आज की डेट में अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हमें यही बोला जाता है कि जावा सीखो, सी प्लस प्लस सीखो, सी सीखो। सी शार्प भी है लैंग्वेज, मोस्टली लोग नहीं जाते हैं। वाई? बिकॉज वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज वेरी वास्ट, ठीक है। वो काफी अच्छी है, एंड सी सी प्लस प्लस से रिलेटेड ही है। काफी कंपनीज में सी शार्प पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं का। एंड गाइज, डेवलपमेंट में मर्न स्टैक, मोबाइल डेवलपमेंट से जाने से अच्छा, जब तक जावा में डेवलपमेंट नहीं सीखोगे तब तक काम करना नहीं आएगा किसी कंपनी में। And this is my personal experience. I have always been more focused on word stack development, but companies Java development ही मानती हैं। Java का backend ही mostly use होता है काफी companies में। डॉकर इस स्टैक जो आप सीख सकते हो। तो ये सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं आपको कैसे पता चलेंगी? यूट्यूब से फ्री रिसोर्सेज, सेल्फ स्टडी में आप जितना फ्री रिसोर्सेज यूज कर सकते हो उतना फ्री रिसोर्सेज यूज करो। गूगल पे सर्च करना इज फ्री,
स्टैक ओवरफ्लो जैसे हमारे पास बहुत सारे टेक के क्वेश्चन बेस्ड है, तो इनका यूज करो। स्टैक ओवरफ्लो पे आपको हर डाउट आपका मिल जाएगा। ऐसा कोई डाउट नहीं होगा कि आपको ना मिले। बहुत रेयर होता है कि आप क्वेश्चन सर्च करो एंड स्टैक ओवरफ्लो पे ऑलरेडी पोस्टेड ना हो। तो इन सारी चीजों का यूज करो। कोडिंग निंजास का अपना जो कोड स्टूडियो है दैट इज कम्प्लीटली फ्री। वहां से जाके आप कोर सब्जेक्ट्स का पढ़ सकते हो, सारा फ्री मैटर। जस्ट सेल्फ स्टडी में आपका मेन चीज क्या है, आपको मोर डिटरमाइंड रहना है, आपको मोर कॉन्फिडेंट रहना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो। डिटर्मिनेशन आपकी पूरी होनी चाहिए कि आप एक भी दिन स्किप ना करो। इज वर्थ इट। मतलब सेल्फ स्टडी के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू हैव और टू ज्वाइन अ बूट कैंप या शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेज होते हैं वो ज्वाइन कर लो, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोई आपको अगर पढ़ा रहा है इंस्ट्रक्टर, तो आपको पता हो कि हाँ दिस इज द वे, दिस इज द थिंग्स आई नीड टू वर्क ऑन। मेरा आई आई फाउंड माई इंटरेस्ट, एंड उसके बाद एक अपना कोई भी बूट कैंप ज्वाइन कर लो। जिस भी एरिया में आप इंटरेस्टेड हो उससे रिलेटेड अपना बूट कैंप ज्वाइन करो एंड यू विल बी गुड टू। डिग्री फ्रॉम एनी कॉलेज इज वर्थ इट। प्लीज डू नॉट से कि आई एम फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज तो इसकी वर्थ नहीं है। आई एम फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज एंड आई एम काइंडली प्लेस्ड इन Amazon। तो इट्स नॉट कि किसी डिग्री की वर्थ है या एक शीट ऑफ पेपर आपका डिटरमाइन करेगा कि मेरी क्या वर्थ है। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको अपनी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। So you mean to say a software engineer is hired by a company not for a particular profile? A software engineer is hired by a company। उसके कुछ टेक स्टैक्स होते हैं जो ऑलरेडी कंपनी जीडी या जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती है, राइट? आपको सी 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 प्लस प्लस, सी हैश, पाइथन, जावा, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये आपके जीडी में ऑलरेडी मेंशन होंगी। इनमें से कोई कि आपको इनमें कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट? तो बस उस लैंग्वेज के डेवलपमेंट तक जाओ। जावा सिर्फ इतना मत सीखो या पाइथन सिर्फ इतना मत सीखो कि आपको हाँ मेरे को डीएसए या डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सॉल्व करना आता है। उससे आपको ये नहीं मैटर करता है, इससे ये नहीं पता चलता कि आपको लैंग्वेज आती है। जावा में जब तक डेवलपमेंट नहीं सीखोगे तब तक यू नॉट बी एबल टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, राइट? अब कंपनी अगर एक्सपेक्ट करिए कि आपको जावा आती है, या कंपनी अगर एक्सपेक्ट करिए आपको सी प्लस प्लस आती है या पाइथन आती है, तो उसमें जब तक जैंगो के साथ पाइथन का प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक डेवलपमेंट नहीं आएगी, राइट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डेवलपमेंट आनी चाहिए किसी भी लैंग्वेज में। You said without degree in a job of software engineering, but company can't shortlist from the career portal. Please, can you specify how we can apply? Yes, I'm coming on to that. आप कोई भी बूट कैंप के शॉर्ट टर्म कोर्स अप्लाई करते हो तो कोर्सेज उन कंपनीज से लो जिनका प्लेसमेंट अच्छा है। ठीक है, आज के डेट में अगर आप किसी ऐसी कंपनी से कोर्स लेते हो जिनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, सो आपको प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। बट ऑलवेज सर्च फॉर उन कंपनीज कि आपका अच्छा कोर्स कौन सा है। आप जिस टेक स्टैक में जा रहे हो उस टेक स्टैक पे बेस्ड उनकी प्लेसमेंट कैसी है। दिस इज ऑल द थिंग्स यू शुड बी फोकसिंग ऑन बिफोर यू आर गेटिंग boot camp। ठीक है, बिफोर परचेजिंग अ बूट कैम्प, बिफोर गिविंग द मनी टू द पर्सन, मेक श्योर कि आप उनसे ये सारी क्लैरिटी लो कि वो कौन सा टेक स्टैक पढ़ाएंगे, कितने टाइम का कोर्स होगा, प्लेसमेंट में कितनी हेल्प करेंगे, कंपनीज अगर आती हैं उनकी थ्रू तो कौन सी कंपनीज आती हैं, क्या आपको उस बूट कैंप से हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही, ये सब फॉलो करो। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सचिन। Guys, 12th के marks would matter or CGPA would matter if you are applying uh, in a MNC. That is main thing. Key companies do ask for if you have had 80% above criteria in all your 10th and 12th boards. Even in your college, if you have it, I have sat through the interviews through my college. So I know this कि अगर कोई campus related company आ रही है, that would shortlist my profile
through my CGPA. ठीक है, that is a something you should have, you should have to maintain in your entire college curriculum कि at least 80% अपनी CGPA रखो, 8 पॉइंट से ऊपर अपनी CGPA रखो ताकि आप अच्छी कंपनीज में बैठ सको. ठीक है. बट हाँ, ऐसी कोई अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि क्लास 12th स्टूडेंट्स को एमएनसीज लेती है डायरेक्टली. बूट कैंप्स करो, थोड़ा अच्छा रेज्यूमे बनाओ ताकि आपके रेज्यूमे, मतलब क्लास 12th के बाद डायरेक्टली दे डू टेक, बट मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे अच्छा है, आपके पास शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपके पास सारे पॉइंट्स हैं. पूरा प्रॉपर एक प्रोसेस है. पहले सेल्फ स्टडी करो, अपना ढंग से एम बनाओ कि व्हाट यू हैव टू डू, कौन से टेक स्टैक में जाना है, इतना समझो. उसके बाद उससे रिलेटेड एक बूट कैंप ज्वाइन करो. बूट कैंप ज्वाइन करोगे तो उसमें वो आपसे प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, जब आप एक बूट कैंप ज्वाइन करते हो तो यूजुअली ग्रुप में होता है. ठीक है, आप कम से कम 10-12 पर्सन के अराउंड होते हो. तो वो सारे आपके साथ अपने जब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हाँ मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, हाँ मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, तो आपको खुद नई नई चीजें पता चलेंगी डेली. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई आज ही आपको बता रहा है कि दिस इज अ न्यू टेक स्टैक एंड इस पे आप जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर दो. ये वो इतना जल्दी डोंट मूव विद द क्राउड. प्लीज अपनी प्रॉपर रिसर्च करो कि उस टेक स्टैक की क्या वैल्यू है. अगर आप वो टेक स्टैक परस्यू करते हो तो आपको बूट कैंप से क्या हेल्प मिल रही है, प्लेसमेंट कैसी है उस टेक स्टैक की. दिस इज ऑल दैट इज यू शुड बी फोकस्ड अपॉन, राइट. ओके. एंड अगर आप बूट कैंप फॉलो करते हो तो एंड में ये आपसे विद इन द प्रोग्राम आपसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करवाएंगे. सो वो प्रोजेक्ट्स आपकी कहाँ हेल्प करेंगे, ये सारे प्रोजेक्ट्स आप अपने गिटहब पे अपलोड कर सकते हो, जस्ट टू शो द रिक्रूटर्स कि या यू हैव वर्कड अपॉन समथिंग. इफ टू मेक आउट योर रेज्यूमे स्टैंड आउट टू द रिक्रूटर, रिक्रूटर आपका रेज्यूमे ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 सेकेंड्स के लिए देखता है. ठीक है, 5 या 6 या 6 या 7 सेकेंड्स, दैट इज इट. ठीक है, इससे ज्यादा टाइम कोई भी रिक्रूटर आपके रिज्यूमे पे नहीं रुकेगा. एंड टू मेक देम हाई, वेट, इससे ज्यादा यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. तो आप स्टैंड आउट कैसे करोगे, आपके पास अगर आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो competitive programming, if you do not know about competitive programming, एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे सारे प्रोग्रामर्स कम टुगेदर एंड देयर अ कंपटीशन ऑफ प्रोग्रामिंग. सो यू हैव अ कोड जिसको आपको क्रैक करना होता है, एंड जितना जल्दी कोई क्रैक करता है, जितना फास्ट उसका कोड होता है, उस पे आपकी रैंकिंग होती है. सो गूगल के काफी हैं अच्छे जो किक स्टार्ट वगैरह हैं जो बिगिनर लेवल को कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए. ठीक है, तो अगर आप यहाँ से शुरू करते हो, यहाँ पे आपकी अच्छी रैंक आती है, आपने ढंग से डीएसए कर लिया है, आपने ढंग से सेल्फ स्टडी कर ली है, आपको पता है ये सारी चीजें कि हम डीपीए क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आपने इनफ प्रैक्टिस करी है, डू सीपी. ठीक है, सीपी में आप रैंक अच्छी लाओ, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करो, तो इससे आपका एक स्टार आ जाता है, आपके पास एक नेम आ जाता है कि हाँ मेरी इतनी रैंक थी इस कंपटीशन में. यू कैन शोकेस दिस, यू कैन ऐड दिस टैग लाइन इन योर रिज्यूमे. तो जब ऐसे टैग्स होते हैं किसी के रिज्यूमे में, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हैकेथॉन्स कराते हैं. ठीक है, हैकर अर्थ हो गया, एमएलएच का प्लेटफॉर्म हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हैकेथॉन्स कंडक्ट करते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन्स. डेवलपमेंट लाइन में अपना शुरू करने के लिए जब आप डेवलपमेंट कर लेते हो, डेवलपमेंट में क्या कुछ आता है, अगर आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो आई वोंट अज्यूम कि आपको ये सब पता होगा, ये सारी टर्म्स पता होंगी. तो जस्ट इन सारी टर्म्स को एटलीस्ट एक बार गूगल कर लो ताकि आपको पता चले कि हाँ दिस इज द फील्ड. प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हम डेवलपमेंट का यूज करते हैं. इफ नॉट जावा, अगर आपको जावा डेवलपमेंट नहीं सीखनी है, देर आर मेनी अदर ऑप्शंस. देर इज मर्न स्टैक, देर इज मर्न स्टैक क्या होती है, वेब डेवलपमेंट. ठीक है, आई एम नॉट asking you to follow one stack. I am a one stack web developer. दो टाइप की डेवलपमेंट होती है, अगेन वेब या मोबाइल. मोबाइल में यू हैव iOS एंड एंड्रॉइड.
and also we have Flutter, Kotlin, iOS, and Flutter. Apart from that, web में there are HTML, CSS, JavaScript. JavaScript के आगे frameworks आते हैं. That is React, Angular, and इसके बाद बैकएंड में Node.js, Node.js, Express.js. तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई. आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज कि आपको ये सारी नहीं पता. इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन. जस्ट इन सारी टर्म्स को एक बार गूगल करो. सबको भी करने की जरूरत नहीं है. जस्ट मोबाइल डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट की एक बार वीडियोस देख लो यूट्यूब पे. दैट वुड बी इनफ. एक बार अगर आप वीडियोस देख लोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इफ यू वांट टू परस्यू दैट थिंग. ठीक है, लोग मेरे से पूछते हैं, आई डू गेट डाउट्स कि विच इज गुड, मोबाइल और वेब डेवलपमेंट. दी ओनली थिंग इज कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है. ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल बेटर है वेब से. वेब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मोबाइल समथिंग यूनिक, ऐसा कुछ भी नहीं है. वेब में रोज नई टेक्नोलॉजी आती रहती है. आई मीन रोज नई टेक्नोलॉजी आती रहती है. रिएक्ट जेएस अब जाके पीपल आर गेटिंग हैंडी एंड काफी लोग रिएक्ट सीख रहे हैं अब. बट देन देर इज नेक्स्ट जेएस. उसके बाद वर्सल इज इंट्रोड्यूस्ड अनदर लैंग्वेज दैट इज सैपर. तो टेक्नोलॉजी आती रहती है, कोड पे शिफ्ट होते रहते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ यूनिक नहीं होगा इस डोमेन में. जिस भी फील्ड में आपको जाना है, इट्स योर पर्सनल चॉइस, इट्स योर पर्सनल कॉल. जस्ट डू एम्पल अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड you'd be good to go. ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड रेज्यूमे के बाद जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, आई जस्ट गो क्विकली थ्रू सम ऑफ द क्वेश्चंस इन द चैट. सो लेट्स स्टार्ट. So someone is a BSc math student and you're interested in web development. So yes, you can pursue web development. If you are good in math, I would suggest game development. Game development is something that requires a lot of effort in maths and physics. So if you're already good in maths, if you're already pursuing BSc maths, तो अगर आप interested है इस domain में, तो it would be a very good opportunity for you. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यस, ऑब्वियसली आप वेब सीख के, वेब डेवलपमेंट सीख के आईटी में जा सकते हो. ओके. हाय मैम, आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट एंड currently आई एम लर्निंग Java basics with BS Algo from Coding Ninjas. Could you please tell me what package band I can expect just after this course? Just a second, guys. Okay, so पैकेज बैंड इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स अगेन. ठीक है, स्किल्स, आपका रिज्यूमे, ये सब मैटर करता है एक पैकेज डिफाइन करने के लिए. कम से कम यू कैन एक्सपेक्ट अ 6-7 का पैकेज. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट क्वालिटीज यू हैव, व्हाट स्किल्स यू हैव. इफ योर रिज्यूमे गेट्स शॉर्टलिस्टेड, these are all the things that matter for a package. ठीक है, I don't know what kind of coder you are, so I can't comment about कि क्या पैकेज मिल सकता है. बट हाँ, आईटी फील्ड में लोएस्ट पैकेज 6-7, 5-6 का भी मिलता है. अगर कोई टीसीएस वगैरह एम कर रहा है, टीसीएस ना कह रहा हूँ, तो 3-4-5-6-7, दिस इज द लोएस्ट पैकेज जो चल रहे हैं. ठीक है, ये रेंज इज द लोएस्ट रेंज. इसके बाद बढ़ती रहती है. Okay, so someone has asked my background, my personal educational background. So after 12th, I had opted for a computer science, IT actually, information technology based engineering degree, and I'm from a tier 3 college. So that's it. This is my educational background. I have a 8.3 CGPA in my college, and before that in 12th, I had the same 8.3, and in 10th 8.8. So I hope you have my educational background. uh, yeah, please tell how to crack man companies. Guys, किसी भी company को crack करने का process is same.
सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके पास यू नो इनफ वो नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर आप डिग्री नहीं परस्यू करना चाहते तो प्लीज सेल्फ स्टडी। अगर आप डिग्री कर भी रहे हो तो भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। कोई भी सीएस स्टूडेंट्स कंप्यूटर कोड के सब्जेक्ट्स पे इतना फोकस नहीं करता है कॉलेज में, बट हाँ दे आर मोर prone to learn after when they are selected for the interviews and तब जाके उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ कोर सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने हैं। तो द प्रोसेस इज सेम। आपका डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स डीएसए इज एवरीथिंग। ठीक है, डीएसए कम कोर सब्जेक्ट्स इज एवरीथिंग। यू शुड फोकस ऑन कोर एंड डीएसए। इसके अलावा यू शुड हैव एट लीस्ट 2 to 3 गुड प्रोजेक्ट्स इन योर रिज्यूमे। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप to get into a mag or to get into a good tech company is to make sure your resume is ATS proof. uh, and ATS proof resume के if you want resources कि आप कहाँ से बनाओ, तो I always recommend 2 resources. The first is Overleaf and the second is Novo Resume. Novo Resume is a bit simpler than Overleaf. Overleaf में आपको थोड़ा सा कोड करना पड़ता है अपने रिज्यूमे का स्ट्रक्चर, एंड टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनी पड़ी हैं ओवरलीफ में, सो यू कैन जस्ट पिक आउट एनी टेम्पलेट यू वांट। एंड डीडी करके एक टेम्पलेट दैट इज वेरी फेमस इन ओवर रिज्यूमे, ओवरलीफ, तो you can pick out that and start working on it. So you can apply in Microsoft if you're from Tier 1, Tier 2, Tier 3. Mostly, if you have a good profile on LinkedIn, they do reach out to you, and the recruiter would eventually reach out to you if you have a good profile. So, what do I mean by a good profile in LinkedIn? You should have uploaded what all tech stack you know. You should have uploaded all your projects. You should have uploaded all your uh, achievements. So achievements में what all you can include if you won a hackathon. As I was saying, hackathons क्या होते हैं? Hackathons are competitions जो development based होते हैं. So I just told about competitive programming. Competitive programming में आप DSA skills apply करते हो in a manner कि आपका कोड बहुत ज्यादा time efficient है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो कोड अच्छा होगा, वो डीएसए प्रूफ कोड होगा या एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा, बट वो एक टाइम एफिशिएंट कोड होगा जो आप सीपी में करते हो। हैकेथॉन्स क्या होते हैं? हैकेथॉन्स डेवलपमेंट बेस्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जो भी आपको टेक स्टैक आता है अपार्ट फ्रॉम जावा, सी प्लस प्लस और सी, इसके अलावा अगर आपने कोई इंडिविजुअल लैंग्वेज जैसे एज आई वाज सेइंग मोबाइल डेव, एंड्रॉइड डेव, मशीन लर्निंग, इवन हार्डवेयर से नेटवर्क्स डिजाइन अगर आप कर रहे हो, या आप हार्डवेयर यूज करके एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, तो ऑल दिस कैन बी अप्लाइड इन हैकेथॉन टू। ठीक है, ये सारी डेवलपमेंट हैकेथॉन डेवलपमेंट, जब आप एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, इसको हम हैकेथॉन्स बोलते हैं। ओके, so you are already from a B.Tech background and your aim is to crack man companies. So it's good that you're doing CP. It's great. The only thing is कि just make sure कि आपके fundamentals, the DSA fundamentals are good. The core subjects की आपके पास अच्छी knowledge है. Start just exploring lead code, start exploring free resources, code.org पे जाओ, कोडिंग निंजस का कोड स्टूडियो पे जाओ, यहाँ पे आपके पास फ्री रिसोर्सेज हैं। फ्री आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हैं कि हाँ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम Amazon, this has already been asked in Amazon, this has already been asked in Meta, this has already been asked in Netflix। तो इन सब पे जाओ, गूगल के क्वेश्चंस देखो, एक पाथ सेट करो। यूजुअली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एम कर रहे हो या अगर आप गूगल एम कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स प्रायर बता देते हैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने से पहले। तो आपके पास सैम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आ जाता है कि आप प्रिपेयर कर सको ढंग से। ऑन द अदर हैंड Amazon आपको जस्ट फ्यू डेज पहले बताएगा कि यू हैव योर इंटरव्यू। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से अपनी प्रेपरेशन रखो। ओके,
Uh, let's get back to the things I had in mind so that I'll just get back to the questions in a few minutes. So, yeah, as I was saying, कि self study, बूट कैंप्स या कोर्सेज ज्वाइन कर लो अप टू यू उसके बाद आपका रेज्यूमे सो व्हेन यू बिल्ड अ रेज्यूमे as I said it should be a good resume it should be ATS proof it should have all your achievements it should have all the tech stack you have worked upon and guys one of the most important thing whichever tech stack you're adding on your resume should have a project associated with it if I'm adding let's say लिनक्स एंड ओएस रिलेटेड अगर आप कोई अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हो दैट इज कम्प्लीटली फाइन लिनक्स का अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ऐड किया दैट इज योर नॉलेज ठीक है बट मेक श्योर वट एवर यू आर एडिंग इन योर रेज्यूमे यू आर थोरो विद इट एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट टेक स्टैक अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लेता है क्रॉस क्वेश्चन तो यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर दैट ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को फ्लटर नहीं आता है सो आई जस्ट एडेड इन माय रिज्यूमे कि आई एम अ फ्लटर डेवलपर if because what happens is if I get cross questions in any of the technology any of the framework in flutter I'll not be able to answer and I know that so please do not do this ki you're adding anything which you're not sure about because that does not gives a good impression in front of the interviewer okay so resume में इसके अलावा सारी टेक्नोलॉजीज ऐड करो विच यू आर कॉन्फिडेंट इनफ सी सी प्लस प्लस पाइथन जितनी आपको आती है उतनी ऐड करो इंटरमीडिएट एडवांस्ड इफ यू आर चूजिंग अगर एनी टेम्पलेट तो इफ देर इज एनी ऑप्शन टू ऐड उसमें ऐड करो कि हाँ आई एम एन इंटरमीडिएट इन दिस आई एम एन एडवांस्ड इन दिस so that the interviewer knows ki what is your understanding about the subject okay and उसके हिसाब से they would ask you questions because if you are a beginner वो आपसे advanced level के questions नहीं पूछेंगे after they've looked up on your resume and so resume is very important if you are thorough with your resume and आपकी सारी कंप्लीट स्टडी हो गई है सब्जेक्ट की आपने सेल्फ स्टडी कर लिया आपको पता है कि सारे कोर सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं आपने डीएसए में एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर लिया है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट अप्लाइंग इन जॉब्स एंड फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है गाइस डीएसए प्रैक्टिस के लिए कोर्स स्टूडियो पे जाओ इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म वहां पे सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कौन सी कंपनी ने क्या क्वेश्चन पूछा है कौन से ईयर में पूछा है सॉल्यूशन मिल जाएगा बट प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑन सॉल्यूशन डिपेंड ऑन हिंट्स ठीक है बिकॉज हिंट्स आपको इंटरव्यूज में भी मिल जाएंगे इफ यू सिटिंग इन अ वेरी गुड कंपनी अगर आप इन मैंग गेम करके बैठे हो तो मैंग में कोई भी इंटरव्यूअर आपको हिंट्स दे देगा बिकॉज दे वांट यू टू क्रैक द लॉजिक ऑफ द इंटरव्यू ठीक है जो भी क्वेश्चन आता है अगर वो मीडियम हाई लेवल का है दे वुड नॉट एक्सपेक्ट योर कोड टू बी सिंटैक्टिकली वेल कि एकदम ही यू आर राइटिंग अ वेरी गुड कोड you're not a pro programmer they know that you're just a fresher who is applying for a job ठीक है so they would ask question they would grade you similarly कि आप एक फ्रेशर हो आपको इतनी नॉलेज नहीं है एंड वो उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे यूजुअली मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं मीडियम पे कोडिंग निंजास की अपनी वेबसाइट्स पे इन आर्टिकल्स को पढ़ो अदर वेबसाइट्स पे इन आर्टिकल्स को पढ़ो आर्काइव्स हर कंपनी का अपना एक आर्काइव बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट आर्काइव पे जाओ गूगल आर्काइव पे जाओ amazon आर्काइव पे जाओ जोन सी कंपनी आप टैग कर रहे हो उस पे जाओ एंड इस पे जाके जो रीसेंट इंटरव्यू प्रोसेस है कि इंटरव्यू राउंड्स कौन से होते हैं फर्स्ट राउंड में क्या पूछते हैं ओए किस टाइप के आते हैं लीड कोड में डिस्कस है लीड कोड डिस्कस में जाओ वहां पे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करे हुए हैं सबने दिस वुड हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज ठीक है
जब आप इंटरव्यूज प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट हो, आपने सारे क्वेश्चंस एक बार देख लिए हैं, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। एंड अगर आपको एक सपोर्ट रोल मिल रहा है, अगर आपको एक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर का रोल मिल रहा है, डेटा इंजीनियर का रोल मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल इनिशियली, डू नॉट मिस आउट इफ द कंपनी इज वेरी गुड। ठीक है, बिकॉज व्हाट कैन हैपन इज कि इनिशियली अगर आपको सपोर्ट का रोल दे भी रही है कंपनी, स्टार्ट वर्किंग विद योर बेस्ट लेवल and maintain a good ambience with the people, maintain a good rapport with the people. Your manager is very important to, to have a very good relationship with your manager. आपके टीम मेंबर्स के आपकी अच्छी इमेज होनी चाहिए कि यू आर वर्किंग एंड यू आर कंप्लीटिंग ऑल द डेडलाइंस, आप डेडलाइन से पहले अपने सारे टास्क कर रहे हो, तो वो आपको खुद ही प्रमोट करते रहते हैं, खुद ही हेल्प करते रहते हैं आपके प्रमोशन में, कि आप एक अच्छे पाथ पे जा पाओ, आप वो कर पाओ कंपनी में जो आप एम कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द स्टैक की सेल्फ स्टडी, बूट कैंप और कोर्स, उसके बाद रिज्यूमे, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। प्रैक्टिस के बिना यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर एनी इंटरव्यू राउंड्स। अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। आपका सीवी बहुत अच्छा होना चाहिए गाइस, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है अब तक, एंड आप क्या एम कर रहे हो, वो आप खुद अपनी इंट्रोडक्शन में बताओगे अपने इंटरव्यू में। ठीक है, सो आपने क्या किया अब तक शुड बी वेरी क्लियर इन योर इंटरव्यू, इन योर रिज्यूमे बिफोर, बिकॉज दैट इज व्हाट गेट्स शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। इसके बाद आई जस्ट गेट बैक टू व्हाट all your doubts are, and if I get a few pointers before which I missed, so I'm seeing my notes, अगर मैंने कोई point miss कर दिया है। Hmm. So let's get back to some questions, and then I'll start. Okay. Hi Mayur, you're a B.Tech automobile engineer and a 2020 pass out in your government exam prep. Now I want to join the software field. It's completely okay. Just make sure, as I said, I've given a few pointers to consider. Self-study, make sure what your aim is, what you're targeting. उसके हिसाब से which profile you're targeting, उसके हिसाब से start learning what all language you're interested in. आपके इंटरेस्ट, आई वुडंट नो, नो वन इन द वर्ल्ड वुड नो व्हाट इज योर इंटरेस्ट। सो उन इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए जो नॉर्मल कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इन लैंग्वेजेस को एक बार जस्ट ब्रीफ सर्च करो इनके बारे में। एज यू फाइंड कि आपके पास आपको कौन सी लैंग्वेज इजी लग रही है, आपको कौन सी लैंग्वेज इजीली समझ आ रही है, किस लैंग्वेज का ज्यादा स्कोप है आपकी फील्ड में, उस लैंग्वेज को मास्टर करो। ओके, एंड स्टे विद वन लैंग्वेज। देयर इज नो नीड टू ऐड कि मेरे को सी भी आती है, मेरे को सी प्लस प्लस भी आती है, मेरे को पाइथन भी आती है, मेरे को जावा भी आती है। डू नॉट गो आफ्टर दैट। जस्ट मेक श्योर कि आपको एक लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती है, आपको डेवलपमेंट भी आती है उस लैंग्वेज में, आपको डीएसए के भी क्वेश्चंस आते हैं उस लैंग्वेज में। दैट वुड बी इनफ। Hello ma'am, please tell ma'am how to apply for Amazon summer internship. Amazon company what deserves to every student. Hi Shivani. If you are applying for Amazon internship, just go to their career page. You will get key what detail. Just fill out the details form and एक बार अप्लाई कर दो, then make they will contact you if your resume gets shortlisted. They just expect your resume is good. आपका decent एक, they don't look out for percentages at all, but yeah, they do look out for projects. They do check कि आपका tech stack क्या है. They do check कि आपने, I applied through campus, so I was shortlisted based upon my CGPA, but I don't think that would matter if you're applying through off campus. That is it actually. That's all they see.
जस्ट आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट होना चाहिए रिक्रूटर के आगे, दैट इज इट. उसके अलावा दे डोंट लुक आउट, एंड दे एक्सपेक्ट every student to be they all the man companies hire the best programmers there are, and they hire the best talent. They look out for people who are good and who can answer questions confidently. So जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, उसमें you have to give your best. Do not be underconfident in front of the interviewer. Make sure you're sticking with your points. Make sure you're asking enough questions. You are not nervous in your interviews, because this is what creates a image of you in front of the recruiter, ki how you're doing in uh, pressure based systems. Because obviously no one has ever usually सबके as a fresher सबके first interview experience होते हैं, and एक बैंक कंपनी में interview experience matters a lot. सो सबका प्रेशर होता है, एंड मोस्टली ये सारे रिक्रूटर्स इन सबको पता होता है कि वो ऑलर इंटरव्यूइंग यू, इंटरव्यूअर्स को सब पता होता है कि यू आर अंडर प्रेशर. सो जस्ट मेक श्योर कि आप उनके सामने कॉन्फिडेंट रहे, यू आर नॉट नर्वस, एंड दैट इज इट. I have completed my BCA through distance education in 22. Now I'm working to improve my coding, DS, and core subjects, and to increase my rating in core 7, course 4 courses. Paths correct? Yes, your path is correct. Before improving your coding, make sure you have good knowledge about core subjects, because if you're aiming to be a software engineer, आपके पास कोर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से ओएस में काम कर रहे हो. यू शुड हैव गुड हैंड्स ऑन द कमांड्स पार्ट, कि आप कौन सी कमांड यूज कर रहे हो. नेटवर्किंग की आईपी कॉन्फ़िग वगैरह, पीडब्ल्यूडी, सारे ओएस में, ओएस और नेटवर्किंग में आ जाएगा. ट्रबल शूटिंग का यू शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट, कि अगर आप एक टेस्टिंग की लाइन में जा रहे हो, अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर की लाइन में जा रहे हो, तो ट्रबल शूट एंड नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट इज इट. आपका पाथ सही है. कोडिंग के फंडामेंटल्स, डीएसए, कोर सब्जेक्ट्स, एंड सीपी. बिकॉज अगर आपको डीएसए नहीं आता होगा, आप सीपी में इतना अच्छा नहीं कर पाओगे. डीएसए इज मस्ट. Vivek, I freelancing salary again depends on what kind of ratings you have, what kinds of projects you're working upon. It depends on what client working with. So yeah, it's a variable actually. Can I get a job in second year of B.Tech CSE? You cannot get a job. You can get an internship in your college years. So yes, you can apply in startups initially. They do not look out for graduates usually. उनको interns चाहिए होते हैं. So start applying in startups in second year. Third year and fourth year college students के लिए, even companies like Flipkart, Myntra, they all do consider third and fourth year college students. Second year के लिए, they companies do not prefer second year students. But हाँ, startups के लिए, if you have good hold on tech, you have good projects in your GitHub, you have good projects in your resume, startups would surely hire. Does year gap and non-IT degree for fan company or top MNC? No, I don't think any of such affects your application to an MNC. The only thing they look out for is your skills and your projects in your resume. And yeah, that is the only thing. They do not look out for if you have a gap or if you have a non-IT degree. If not, if you're not able to apply through their careers page, reach out to developers, because what happens is कि usually company internal hiring के लिए they do put out, or external hiring के लिए developers or recruiters do put out a post on their LinkedIn handles, and you can just go add them, connect with them. Networking is very important if you are applying either off campus or through non-IT degree. It's completely fine. ऐसा कोई mandatory नहीं है कि you just have to apply through careers page. Look out for referrals through networking, and you can apply through that too. Because उससे आपको रेफरल मिलने के लिए क्या मेन चीजें चाहिए? प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं चाहिए,
रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए। अगेन सारी बात आपके प्रोजेक्ट्स, रेज्यूमे एंड डीएसए लेवल पे भी आती है। अगर आप किसी से रेफरल मांग रहे हो तो दे वुड एक्सपेक्ट यू टू बी good in lead code. You should have a good profile in lead code. You should have solved enough number of questions in lead code, enough number of hard or medium questions in lead code. ये सारी चीजें do affect your uh, profile even if you're asking for a referral from someone. तो just make sure कि आपके पास ये सारी चीजें हैं before you are asking for a referral. ओके मैम, मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हूँ and you have C programming and Java. So, Raj, before aiming for a good job, just make your skills a bit better. Java in C का basics is not enough to get a job in IT sector. Make sure कि आप इसको एटलीस्ट एक अच्छे डीएसए लेवल एंड थोड़ा सा डेवलपमेंट ऐड कर सको, ताकि आपका रिज्यूमे एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट हो जाए एंड आप इंटरव्यूज ढंग से दे पाओ. ओके, सो दैट इज इट. This is not enough. You just have to work upon थोड़ा सा, so and practice enough a number of questions ताकि at least आप interviews clear कर पाओ, and that that's all. Hello ma'am, I'm learning web and doing things with JavaScript. Should I learn another language for DSA or just go with JavaScript only? Another language would be a good idea actually, because JS for DSA is not a good idea. आप जावा या सी प्लस प्लस में जाओ या पाइथन में, whichever is convenient to you. JS just डेवलपमेंट के लिए रखो, because at times companies do not are looking out for just JavaScript. बहुत कम होता है कि कंपनीज में JavaScript related projects बने हो पूरे पूरे. JavaScript is just used for front end or full stack developers. So yeah, that's it. Make sure you have another language too. Java is sufficient to get a job. Java is sufficient to get a job. Java में आपके पास good projects होने चाहिए अपने resume में. If you're just learning Java, Java development आपको आनी चाहिए. Spring Boot, JPS, DBs आपको सब आना चाहिए, ताकि आप एक at least full stack application present कर पाओ Java में. Again, Vivek, as I said, web dev or app dev is your personal call. It's your choice कि आपको किस में जाना है. There is no better or it's not good option in development, because ऐसा नहीं है कि वेब एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर रहा एंड ऐसा नहीं है कि मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर रहा, राइट? मोबाइल एप्लीकेशंस भी सब यूज कर रहे हैं, एंड वेब भी वी आर यूजिंग लैपटॉप्स करंटली. So people are using web technologies too. तो it totally depends on आपको क्या अच्छा लगता है, what are your skills, and इसको फाइंड करने के लिए जस्ट डू अ स्मॉल यूट्यूब सर्च. एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, एक सिंपल वेब ऐप कैसे बनाते हैं वो देखो, एंड एक सिंपल ऐप मोबाइल ऐप कैसे बनाते हैं ये देखो. जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, विच एवर इज सूटेबल टू यू, विच एवर इज easy, विच एवर यू फाइंड इंटरेस्टिंग, डू दैट. इट्स नॉट गुड और बेटर इन एनी केस. ठीक है, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा वेब डेव ज्यादा अच्छी है मोबाइल डेव से, या मोबाइल डेव ज्यादा अच्छी है वेब डेव से. ऐसा कुछ नहीं है. आपका जो इंटरेस्ट है, अगर आपने एक फुल स्टैक वेब डेवलपर के रोल के लिए अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली वेब डेव की प्रोफाइल वुड बी मैटर्ड. ऐप डेव में यू हैव iOS डेवलपमेंट, यू हैव एंड्रॉइड डेवलपमेंट. इट्स टोटली योर कॉल. Hi Nikhil, I am from Guru Tegh Bahadur Institute of Technology, New Delhi. It's an IP affiliated institute, and yeah, it's a tier 3 college. So I'm from IP University.
I completed my BSc in 2019 and I'm now working as a private teacher. Is there any chance to get into a product company? Hi Abhishek. Yeah, you can actually get into a product company. As I said, your skills matter. Uh, if you're working as a private teacher, just make sure you have mentioned this in your resume that this was your source of income and this was your profile from this many years. And apart from that, if you are built good projects, if you have worked upon full stack applications, since you'll be applying for not a fresher profile, I think you're fresher, yeah, I guess you'll be applying for an SD1 role only. So you can expect, because you're senior in the industry, so you can expect some questions which are based on system design. So उसके लिए just make sure you have just studied the subject well, and yeah, you can get into a product company. DSA, again, DSA is important. Good course knowledge about the core subjects is important, and projects in your resume is very important. So if you have four or five these things, your degree does not matters. The timeline in your work does not matters. I also completed Java and C, but I don't have a skill. Uh, you have completed Java and C, but you don't have a skill. What does that even mean? How can you not have a skill if you have completed Java and C? Java and C complete करने में it takes an ample amount of time. So how can you say that you don't have a skill? What have you completed in Java and C actually? Ma'am, I completed my computer technology diploma. How to get a job in product-based company? Okay, so we have completed a uh, computer technology diploma. It's very easy to get a job in product-based company. You are already from a computer-based background, so you have a knowledge about the subjects I'm talking about. You have, if not, just as I said, just stick on to the path. Self-study is very important. Practice questions. uh, Start learning DSA if you're not already familiar with it. Start DSA. Before DSA, make sure you have a good hold on the programming language you're starting DSA with. If you're not, आपको पता ही नहीं है जावा में क्लास की क्या वैल्यू है, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऊप्स का क्या रोल है इन जावा, सी सी प्लस प्लस में ऊप्स का क्या रोल है, वेक्टर्स क्या होते हैं. If you're not familiarized with the terms only, you'll not be able to do DSA, right? अगर आपको पता ही नहीं है कि टर्म्स क्या हैं, एरेज क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इन पे फंक्शंस कैसे करते हैं, स्ट्रिंग्स के क्या फंक्शंस हैं दोनों लैंग्वेजेस में, इफ यू नॉट फेमिलियर विद दैट, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक DSA क्वेश्चन. ठीक है, तो डीएसए में जाने से पहले मेक श्योर यू हैव अ गुड होल्ड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर टारगेटिंग टू pursue with, or you're targeting to clear the DSA part with. That is important. ठीक है, जावा सी प्लस प्लस सी पाइथन कोई भी यूज करो, मेक श्योर कि फंडामेंटल्स अच्छे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. ओके, इसके बाद द पाथ इज सेम. डीएसए करो, डीएसए मास्टर करो, गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जोन सी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपने एम करी है, सर्च करो कि उसका पास्ट 8 मंथ्स का या ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर में जितने इंटरव्यू प्रोसेस हुए हैं, उनके इंटरव्यू के आर्टिकल्स पढ़ो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या चल रहा है, कितने राउंड्स होते हैं, कौन से राउंड्स होते हैं. दैट इज, इसके हिसाब से प्रिपेयर योर मैटर. नोट्स बनाओ इफ फॉर कोर सब्जेक्ट्स, बिकॉज एंड में यू विल नॉट बी एबल टू, अगर आप गूगल सर्च करके भी पढ़ रहे हो, तो यू नॉट बी एबल टू रिकॉल कि यार आई थिंक आई स्टडीड दिस बट आई एम नॉट गेटिंग. तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप नोट्स बनाओ, चीट शीट्स ही बनाओ, एक पेज पे सारे टॉपिक्स लिखो एंड कोड्स में लिखो कि हाँ, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था. क्योंकि आप जब खुद कोड्स बना रहे हो, आप जब खुद पढ़ रहे हो, इनफ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम लगा रहे हो एक टॉपिक समझने में, एंड उसको एक स्मॉल 3 to 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो आपको जब 3 to 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन जब पढ़ोगे, उससे भी सारा टॉपिक याद आ जाएगा. ठीक है, इंटरव्यू में 3-4 लाइन की एक्सप्लेनेशन देना इज इनफ.
वो ज्यादा डिटेल्ड नहीं पूछते हैं, बिकॉज 1 आवर के इंटरव्यूज में दे एक्सपेक्ट टू क्लियर एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर वो 2 मिनट भी एक क्वेश्चन को दे रहे हैं, दैट इज इनफ। ओके, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके बाद डेवलपमेंट इज योर ओन पर्सनल चॉइस, आपका रिज्यूमे बिल्डिंग इज योर ओन पर्सनल चॉइस। So you have applied through Naukri, AMCAT, many other websites, but you're not getting a chance for interview. What should you do? Uh, your resume matters, guys. तो resume में please make sure कि आपका जो भी आपने information दे रखी है, it's related to the company. Make sure you're applying to the company with a dedicated resume. कि आप किसी भी प्रोफाइल में अपना resume डाल रहे हो तो do not expect a call back. अगर आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ग्राफिक्स की उसमें जाऊंगी तो डोंट एक्सपेक्ट अ कॉल बैक, ठीक है। एंड नौकरी एमकैट के लिए आई हैव नो पर्सनल एक्सपीरियंस, but yeah, AMCAT ka, I think there is an exam that you need to give, so you can give such hiring exams, and in hiring exams के base पे you can expect a call back. तो that's it, because I think AMCAT का एग्जाम होता है and you need to give the exam, and उसके बेस पे they select which companies you can apply to. तो उन companies के you get text link if you're you can apply. If not, yeah, they do tell you कि you are not uh, applicable, you cannot apply to this company because your score is less or something. So make sure when you're preparing for these exams too, past 3-4 years के पेपर देखो, how questions have come, what is the level they've increased to, उसके हिसाब से just practice. Okay, I think that answers your questions. Uh, if you are applying through campus, yes, there is a percentage criteria for MANG, because on campus में आपका resume they select through your, you know, uh, percentage, what CGPA you're holding to, if you have any backlogs or something. So yes, percentage there matters for FANG, but if you're applying off campus, I don't think people, if you do not have a distinction, people don't often mention their percentage in their resume. So it won't matter in FANG or any other company unless and until they've asked in the resume, that if they're asked in the application form. Okay, so what is the difference between BSc, CS or IT? BSc CS is more computer science related. आप में सारे core subjects जो भी आएंगे, the main difference in B.Tech, CS or IT comes in fourth year. Third year तक mostly all subjects are same. Same पढ़ाई हो रही होती है. CS and IT में main differences last year, fourth year में आते हैं. जहाँ पे CS में लोग people are more focused on computer science based projects. In IT में the main focus is on networking, but in fourth year. एकदम लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स अलग होते हैं सीएस से, उससे पहले तक सारा एवरीथिंग इज सेम. आईटी में देयर इज अ बिट टैड मोर influence on subjects like networking, subjects like testing, subjects like you can say हार्डवेयर. बट सीएस में इतना नहीं होता है, आईटी में ज्यादा स्कोप होता है. नेटवर्किंग, अगर आप नेटवर्किंग की लाइन में जा रहे हो तो आईटी इज मच बेटर. आई एम You don't need a highly skilled brain, not uh, when someone was born, तो उसको ऐसा ब्रेन गिफ्ट नहीं हुआ था. उन्होंने पढ़ा, उनको
इंटरेस्टिंग लगा तो जाके दे मास्टर दैट कोड. So if you are good in coding, if you are interested in coding, only and only then pursue a career in software engineering. Because imagine you have to sit with your laptop for if you get a job in 22 years of age, if you get a job in 21 years of age, तो तब से लेके at the span of let's say 40, 50, जब तक you work, you have to sit with your laptop. You just have to code. If that is something you're looking for, if that is something that interests you, if that is something that is useful to you, only and only then pursue a career in software engineering because only then come in IT industry because that is what our lifestyle is. कोई भी IT engineer, they sit all day long and they just code. That is it. If you are geeky, if you're nerdy that much, they're good to go. ऐसा कोई नहीं कि कोई मास्टर करके आया ऐसा पहले से किसी को पहले से कोडिंग आती थी. That is not a point, right? Yes, what doubts do you have if you completed graduation in BA? You can get a job in software company. Just you have to be, as I said, please do watch the video again if you've not already been a part of the video from the beginning. Just watch the video from the beginning. I have give pointers what you have to prepare, how you have to prepare, where you have to prepare, कि enough amount of resources available online. Just do a quick Google search on whatever you want to prepare. Coding Ninjas may you get free resources on Code Studio platform. You can start from there. You can start learning core subjects from there. So you have everything. आपको just एक path set करना है self study करके. You just need to find out what interests you and उसके according you can set your path. So you have a diploma in computer engineering and now you're working as a React or JavaScript developer. Does bachelor degree required for product-based company? It depends on what all skills you have. If you have diploma and you're working as a React.js developer, you can apply for front-end or full stack related jobs in Mang. If there is a requirement in the job description that you need a computer science engineering degree, only and only please then don't apply. But most of the times it's not mentioned initially. They do ask you in the further rounds. How much 12th percentage matters if you are applying through off campus? 12th percentage does not matters. But if you're applying through on campus opportunities, if you're applying through a boot camp too, if you're applying through a career related platform, let's say you are a coding ninjas ka student or you are some other company ka student, and then your company is coming to your um technical platform, they would ask ki what your percentage was. So make sure you maintained a good percentage, at least 75 plus percentage. You would be, you would get job. Don't matter. Okay, so you have what a DSC course. I am not the best person to answer your questions on data science. I have not pursued that. I am not a ML person, so you can ask someone else that would be a much better
advice from my end. You can ask anyone who's related in data science or ML field. Just search them on LinkedIn. Just find the best person, any speaker who is working in ML related field. Just ask your questions over there. That would be a much better thing because I have software engineering ka thoda bahut experience. I can just answer your questions related to that and even on Modern Stack or full stack development. But yeah, I do not have any experience in ML or data science, so not the best person to approach to. Okay, I guess I would uh, end the stream on this note. If you have any further doubts, you can reach to me through LinkedIn. Just search me on LinkedIn, you'll find me and just search for Being Thought. Apart from that, I think I'll end it here. Just to make sure, guys, the degree does not matter, your skill does. हर कोई बोलता है, but yes, this is the fact कि आपके डिग्री इतनी मैटर नहीं करती है. जस्ट आपके स्किल्स करते हैं. स्किल्स कैसे रिक्रूटर को पता चलेंगे? आपका रिज्यूमे. Your resume should be very good. It should state what all you have learned, what all tech stack you're familiar with, wherever you have worked upon, whatever projects you have worked upon, and projects ki timeline, your achievements. Guys, do take part in hackathons. Do take part in CP. अगर आप CP में हो तो CP competitions करो. इससे आपकी प्रोफाइल हाईलाइट होती है. If you have won a hackathon in some other country, if you've worked with international students, if you've worked in India in a hackathon, let's say you participated in Smart India hackathon or a Flipkart hackathon. So all this matters. Microsoft ka hackathon is just on is happening for girls. So you can take part in all these hackathons, and that is something that would highlight your profile. If you achieve any small achievement even in these grand hackathons, it would be a very good achievement to add in your resume. So that is my advice. Thank you so much for joining the live session. uh, have a good day. Bye bye.